every GST council meeting is as budget, where we see ocean of changes, and which is clearly opposed to income tax, because in income tax we have yearly changes so far as the notifications and the changes in the acts are concerned. But here the council brings the changes, propose the changes, and the government provides the notification. So periodically we are able to notice the changes, and that is why GST is a very hot topic so far as the news are concerned, right? So in every few days you must be viewing, or you must be noticing the updates in newspapers or other public forums also, right? Of course, social media is also playing a vital role in this. So, so we have number of changes, number of updates, but I will be confining my discussion because I will be having a limited time. So I want to do a justice with the given topic, and that is why with the precise scope I would be willing to carry this particular discussion. Okay. So this time we have the budget 2023 with us. I would request organizers to please keep others on mute. It is very difficult to go ahead. So organizers could help me in that. Okay. Okay. So today we'll be discussing on the changes as proposed by the Finance Bill 2023. Please, please note that this is the stage of Finance Bill only. So firstly a draft is there, then the Finance Bill is there, and then we have the Act. So this is the WIP stage. And the moment it is passed by the Parliament, lower house, upper house, and president. So if it is passed by or if it is signatured by honorable president, then the date of applicability of these provisions shall be notified. Kindly take care that this is not the central law only. GST is having two legs, central and state. So all the states have to pass this particular law in their respective legislative assembly, and when it is signatured by honorable governor of the respective state, it becomes the state act, and then a common or uniform date is considered for the purpose of notifying the effective date of the provisions. So though we are able to see the changes today, or we are able to understand all these things, but the applicability date is not the 1st April as opposed to direct taxes. So Income Tax Act is having the effective date of 1st of April 2023 in this case. Lekin these proposals are yet to be notified. Of course, it will take a time. So with this particular preamble, let us start to understand the changes in category first, and then we'll go with clause by clause analysis, right? You understand that GST is a very prime source of the revenue of the government or exchequer, and that is why they are very much concerned about the revenue, and of course one should be. This time we have 20 plus changes
20 plus changes through budget 2023. For the sake of brevity, at the outset, we have given a gist of amendments for you, so as to understand that almost in every aspect the changes are there. You all must be knowing about GST somehow, because if I am narrating all these changes or if I am discussing with all these changes, I should have a very clear presumption that you have the knowledge of fundamentals of the GST, because this is the session of updates. I will not be able to go through all the fundamentals of the GST. No, otherwise, the session will be of, will not be having a purpose as such. This session is very clear that GST proposals or the updates in GST, though it should of course carry with a presumption that one is knowing about the background or one is knowing about the fundamentals of the GST, right? So you must be noticing that in every aspect, almost every aspect of the GST, we have the changes in it, be it minor or major, but almost all the dimensions of the GST we have the changes. Like we understand that GST is levied on the supply. Okay, so we have the changes, we have the updates in the scope of supply. Based on the levy, one has to decide whether the registration is mandatory or not. So we have the changes in registration related provisions also. And once you are registered, you make the supply, and then you have the output tax with you. You have input tax credit with you. So in both of the aspects also we have the changes. If you delay in making the payment, we have the interest also, interest liability also, right? Somehow this time interest related provisions do have some different kind of changes. We'll of course go through on this. But yes, interest related changes are also made by the parliament, are also proposed by the government here. We have penalty related amendments also with us. Of course, we do not have the late fees related any sort of amendments. Yes, at the same point of time, I should also make it clear that people were having the expectation that there will be amnesty scheme in GST, but this time we do not have any insight or oversight on the amnesty in GST through this particular budget, right? We have compliance related changes and imprisonment and compounding related provisions with us, right? So you are able to see that almost all of the dimension, there are changes in the proposed in the GST law. And this is the beauty of the law, because they are making the changes in the act. They are also coming up with notifications and circulars. But this budget does not consider all these notifications and circulars, because this budget proposes the changes through the finance bill, which in time to be called as Finance Act once it is gets assented by the parliament. Now this is again a different type of preparation for your simplicity, that these are the provisions and these are the sections wherein certain types of amendments have been proposed in name of omission, substitution, renumbering, insertions, etc. Right? So every type of amendments, be it insertion, omission, substitution, is there in the law, right? So of course I will not take it too much technical, but these ready preparation will help you to have the control on the changes. All right. Now I am going through the provisions wherein the changes are proposed. I will take this session ahead by considering the changes in the provisions one by one in a chronological manner, right? So the very first section where the changes
where the change is proposed is section 10, which is nothing but the composition levy. And in every stage of changes, I will share the brief background of the existing status, and will also share to the extent what I can cover the reason of changes and the type of changes and the implication thereof. Okay, so now the journey starts. It says that composition scheme is amended to give the flexibility to the business class who can make the supply of the goods through e-commerce operator. Please consider that composition scheme is a sort of presumptive scheme, as we see in the income tax. So in income tax, we have a very straightforward scheme like 6% or 8% of the gross revenue, right? So whatever the income is there, whatever the gross revenue is there, you have to pay 6% or 8% as the case may be on your revenue amount, right? So what is the intent of that scheme? The intent is that you do not have to prepare the detailed, you do not have to prepare the detailed financial statements and all. You just pay on your revenue amount, and you just compute your income based on the revenue amount. So income, when I use the word income, it is very consciously used because the income tax is levied on the income, right? So the profit or gain or loss arising from the business or profession head is also called as an income, right? That is the scheme, let down in the income tax act. Because the small taxpayers or small businessmen may not be able to prepare the financial statements or books in such a detailed manner. So they have just make it simplified by stating that you pay you compute your income by considering a very presumptive manner, right? On a similar lines, the composition scheme is also providing a manner to compute the tax liability in a very simple manner. Otherwise, in normal scheme, what happens? You have to, adopt. You need to, identify your HSN, and you need to identify your tax rate. You have to compute the output tax liability. You have to compute the input tax credit, and then you have to consider your net tax liability, and accordingly you have to pay the tax and all. Right now, they have. In GST law, they have made it very simple for the small taxpayers that you have to pay a tax on a very ad hoc rate, right? A very minimal rate, that is say 1% in general, or 5% or 6% in the peculiar cases. So you do not have to compute your eligibility of ITC and all, because the ITC is not allowed. Say you make a sale of 1 crore rupee, you pay 1% tax, that is 1 lakh rupee, and that's enough. Now, whatever the profit margin is there, whatever your input tax credit is there, they are not concerned with this. All right, you have to apply a standard rate of tax on the value of the supply. It does not consider any ITC component as such. This is the composition scheme in short, right? Now, this is, of course, available to the small taxpayers only, because it somehow restricts the seamless flow of the input tax credit. If I am the dealer, I am purchasing it from my supplier, and in capacity of composition registered person, I will not be eligible to get the benefit of the input tax credit. And whatever the price is there, at which I am selling this product to my customer, I have to pay the standard tax with a standard rate, right? So this scheme is at present available to the persons who have the small turnover. Now, what is the meaning of small for this purpose? The word small is not used, but
for the sake of simplicity, we use this kind of term. They say that, if you have the aggregate turnover which does not exceed rupee 1.5 crore, and in the few specified states, if you have the turnover which does not exceed rupee 75 lakh, one can opt the composition scheme. There is another point, another sort of composition scheme which is laid down under section 10 subsection 2a for the, in general, which we say that it is for exclusively, it is for the suppliers mainly. That is where the turnover does not, aggregate turnover does not exceed rupee 50 lakh, right? So different kind of composition schemes, and based on the different threshold is also there in the law, right? Now the background is that it is not so simple to choose or so simple to be eligible under the composition scheme. Why so? Because the law states that you have to satisfy few conditions so as to be eligible to opt for the composition scheme. Like it says that the supplier who is engaged in interstate supply will not be eligible to opt the composition scheme. So if you are making the interstate supply, this scheme is not for you. You have to opt the regular scheme only. So it is not the small taxpayer who have the choice universally. You have to be within the four corners of the eligibility criteria, and then only you will be able to go for the composition scheme. Like this, we have another condition at present. Whenever I am using at present, it means it says it is the present position, right? So the present provision means without considering these changes, because these changes are still yet not at the final stage, and also it is yet to be notified. So the present provision says that if the person is making the supply of the goods or services through e-commerce operator, who is required to collect the tax at source under section 52. So if you are making the supply through e-commerce operator, you will not be eligible to opt the composition scheme. Now, the proposed change says that even if you are making the supply of the goods through e-commerce operator, you will not be disentitled to opt the composition scheme. Means the scope of composition scheme or the doors of composition scheme is open for those suppliers who wish to make the supply of goods through e-commerce operator. So if I am working in small places, or if I am working to the small extent only, the law is giving me the flexibility to engage myself or to enhance my business through e-commerce operator. Please take care that there is no subsequent or consequential amendment so far as the interstate supply of the goods is concerned. At one place, I have been given a flexibility to supply the goods through e-commerce operator. But at the same point of time, there is no consequential amendment, because if you are making the supply through e-commerce operator, e-commerce operator opens the entire world to you, right? But making an interstate supply through the e-commerce operator, making the supply of the goods through e-commerce operator should not be construed as flexibility to make the interstate supply as such. This condition will still remain the same, that you can make only and only intrastate supply. So if you are, say, located in the state of Punjab and you want to supply a particular product in the state of Rajasthan,
By remaining in the composition scheme, no. At present also, in future also, these doors are not open. Which door is open? That you can make the supply through e-commerce operator. That's all. Now, what will be the implication? Implication is that the e-commerce operator will have to, firstly, e-commerce will operator will have to open the door for the composition scheme, for the composition registered person also. But they will have to, remain the doors closed for the purpose of making the interstate supply for these composition registered person. एक दरवाजा उनको खोलना, एक दरवाजा उनको बंद ही रखना पड़ेगा, because law does not provide that kind of flexibility. Now you can see, you can closely observe that law is not disentitling the e-commerce operator as such, but they are making the condition for the person who wish to supply by remaining in the composition scheme. So an issue arises if a e-commerce operator makes the supply, or e-commerce operator allows a person who is registered under composition scheme to make a supply through it. What will be the consequence? So now we have another change in section 122, having an insertion of subsection 1b, which says that e-commerce operator, if allows a composition registered person to make the interstate supply, then e-commerce operator will be liable to pay the penalty. And the penalty is nothing but the difference of tax. Say 18% product is there, and if someone is making a supply at the rate of 1%, so 70. So supplier को तो उनको पकड़ना ही है, because they will not be entitled to remain in the composition scheme, so they will have to pay 17% tax. At the same point of time, e-commerce operator will be liable to pay the penalty equivalent to difference of amount. So that penalty will be equal to 17% of the tax in the instant case, in this particular example. So, law is being drafted in such a manner where people should not find the space to make to do anything, right? That is why एक जगह change जहाँ होगा तो parliament को दूसरी जगह भी सोचना पड़ता है कि what can happen in another provisions, right? So they have made a consequential amendment in section 122, which will read in times to come, right? तो पहला यहाँ से observation हमारे सामने बहुत clear है, that a person who is registered in the composition scheme can still make us will be able to make the supply through the e-commerce operator, and this will be of the goods only. So e-commerce operator के through आप services की supply नहीं कर सकते by remaining in the composition scheme. So this is the very first amendment, which I have discussed with you. And now we have another set of provisions in the eligibility and conditions for taking the ITC, that is input tax credit. So friends, if you have any sort of doubt, if you have any sort of questions, please let me know at the same point of time. I will be happy to answer the same. Okay. So please take care that you do not wait for the end of the session to ask the queries. Wherever we discuss all the single set of provision. Okay. You may ask the questions relating to this. This will make the session effective. Right? On online portal, it is very difficult to have that kind of convincing, because we always say the body also speaks, right? Or body जो speak करती है वो पूरा reflection इस online sessions में हम वो deliver नहीं कर पाते, right? So your keen attention is highly desired to make this particular session effective. Unless you ask the query, unless you discuss the thing, you won't be able to enjoy that. I will not, and on the same line, I will not be able to make it more interesting. Okay, so let's go with section 16, eligibility and conditions for taking the ITC. Please take care that section 16, the input tax credit aspect is already
seen number of changes in previous 5 years. There are number of changes because government is always concerned about its own pocket. So there are two legs only, input tax, output tax, and input tax credit. So of course, government has to be very conscious about the provisions for output tax and input tax credit, right? Section 16 provides the eligibility criteria of input tax credit, stating that person has to satisfy these certain conditions so as to be eligible. Just to make a brief of this particular provision, it says that registered person will be entitled to take the credit only if the certain conditions are satisfied, right? Like just for the make of just for the introduction purpose, I am making it in a very brief manner, that law says that if the person is registered, the person is having a tax invoice in possession, the registered person should have received the goods or services, or both as the case may be. It should be reflected in GSTR 2B. The payment of tax should be made to the government, and the return should be filed by the recipient. So if these conditions are satisfied, then only the person is eligible to take the credit, of course, with certain more conditions and restrictions or other eligibility criteria as mentioned in different set of provisions. Right now, let us come on the aspect of the change. At present, the provision says that if a recipient fails to make the payment to the supplier within 180 days from the date of the issue of invoice. So in a case where you say, for an example, you purchase the goods from your supplier on 1st of July 2000, say 1st of July 2022, okay, and if you have failed to pay, the consideration and the tax to the recipient or to your supplier within 180 days from the date of the issue of invoice. So thereby, considering that 180 days say expires on 27th of December 2023, then in that case, law says that you should you should be ready to face the consequence, and consequence is stated in the second proviso of section 16 subsection 2, which says that amount equivalent to ITC availed by the recipient shall be added to output tax liability along with the interest thereon. Now a very particular kind of wording. So in simple, what is the current practice is that people are reversing their own credit, right? So अगर आपने 1st of July को purchase किया, and if you have failed to make the payment within 180 days from the date of the issue of invoice, तो say 27th of December तक आपने उसका payment नहीं किया, in that case what will happen? You'll have to pay the amount equivalent to ITC. Okay, and law further says that as and when you make the payment, you can reclaim the same. So 27th of December से December तक आपने उसका payment नहीं किया, then in that case law says that it should be added to the output tax liability. तो जब आप December का return file करेंगे say 20th of January, so 20 जनवरी तक जब आप GSTR 3B को फाइल करेंगे, 20 जनवरी तक का मतलब ट्रेडिशनली और कंजर्वेटिवली मैं बोल रहा हूँ, चाहे 20 को करें चाहे 21 को करें, जब भी करें, then in that case you have to pay that particular amount. So no, just to protect the MSME or just to protect the supplier, this particular set of provision is there, not MSME only. Just to protect the supplier, this type of provision has been drafted, right? This is a very first intention. The second point is to avoid the fake invoicing. Because what people could do is person A buys the goods from B and just takes the if A gets the invoice from B, and if
merely based on that particular condition, A takes the credit in GSTR 3B. You know, in GSTR 3B, if A takes the credit merely on the basis of the invoice, and if A is not supposed to pay the amount to the supplier, then there will be use malpractices. So as to avoid that particular fake invoicing, law states that recipient has to pay the amount to the supplier also, right? तो अगर सिर्फ और सिर्फ मैं आपसे इनवॉइस ले लूं और मुझे पेमेंट करने का कंडीशन नहीं है, तो आप सोचिए फेक इनवॉइसिंग का क्वांटम कितना बड़ा हो सकता है. So law has drafted this particular provision in such a manner that one has to pay the amount within 180 days from the date of the issue of invoice. Otherwise, the amount equivalent to ITC availed by the recipient shall be added to the output tax liability. Now, the anomaly which was being faced by the taxpayer, that why it should be added to the output tax liability, because this is nothing but the ITC amount which he has availed from the supplier on the receipt of the goods or services, or both, as the case may be, right? This addition to the output tax liability was written in a very conscious manner by the parliament, because on that particular point of time we had GSTR 1, 2 and 3B sort of mechanism, right? That the supplier has to furnish GSTR 1 on or before 10th of the following month, and then the recipient has to, the same shall be reflected to the recipient on 11th, and recipient has to agree or accept or reject that particular amount कि भाई ये मेरा क्रेडिट है, तो उसको एक्सेप्ट करना है on or before 15th, एंड फिर उसको GSTR 3 में उसको एज एन इनपुट टैक्स क्रेडिट एंटाइटल होगा. इस तरीके का मैकेनिज्म लॉ में पहले था, इनेक्टेड था. Later on, when July 2017, this particular law, came into force, and people started to show the resistance on the entire mechanism, stating that in India, a country like India, this kind of engagement is very, very difficult, and this type of working is going to be very, very cumbersome for the businessman, especially small scale businessman. That 10 to 20 तक तो हर एक बिजनेसमैन इस काम में एंगेज ही हो जाना है. In that case, government, thought of to introduce another type of return in instead of following GSTR 2 and 3. So they came up with GSTR 3B, that is the summary return where your output tax liability and input tax credit is required to be declared, and based on that, you should pay the net tax liability. Now, this addition to his output tax liability has been substituted by the particular wordings, that is paid by him along with the interest payable under Section 50. See, the taxation statutes, do have a peculiar type of nature where, courts have upheld number of times that the law should be interpreted in a very strict manner. So strict interpretation should be adopted for following the taxation statute. So जो लिखा है वही पढ़ना है. Now people were having that kind of view that why it should be added to, how it should be added to output tax liability. There is no mechanism, because GSTR 3 में वो mechanism था, अभी हम लोगों के पास में कोई mechanism नहीं है. और output tax तो वो टैक्स है जो आपको आउटवर्ड सप्लाई पर पे करना है, देन व्हाई इट शुड बी एडेड. सो नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स कुड हैव बीन स्टेटेड. तो लिटिगेशन में ये सब चीजों को बहुत ज्यादा तरीके से एज अ ग्राउंड लिया जाता है दैट लॉ इज नॉट प्रोवाइडिंग द प्रॉपर वे टू पे द पर्टिकुलर अमाउंट व्हिच यू हैव इंटेंडेड अंडर दिस पर्टिकुलर प्रोविजन. So people do have several kinds of things in their mind कि हम तो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी अभी तो मैकेनिज्म ही नहीं है, प्रोसीजर जब तक नहीं है तो सब्सटेंटिव प्रोविजन को कैसे इफेक्टिव किया जाए. तो प्रोसीजरल लैप्स के नाम पे लोगों को अपने अपने ग्राउंड्स रखते हैं और वहां वो फिर चीजों को अलग वे में निकाल के ले जाते हैं. So government has rightly noticed this particular thing, and they have substituted by way of a wording which is saying that the amount equivalent to ITC availed by the recipient
shall be paid by him along with the interest payable under section 15. ऑलराइट, तो ये अब क्या बोल रहे हैं कि आपको अमाउंट पे करना है, पहले बोल रहे थे आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड करना है, इम्पैक्ट वही है लेकिन वर्डिंग्स पर जाकर डिबेट होती है, तो उन्होंने वो डिबेट का रास्ता ही खत्म कर दिया है एंड दे हैव स्टेटेड दैट दिस अमाउंट शैल बी पेड बाय हिम अलोंग विद द इंटरेस्ट पेबल अंडर सेक्शन 50. तो लॉ खुद लॉ नहीं बोल दिया, यहाँ लिखा गया था अलोंग विद द इंटरेस्ट देयरऑन इन सच मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब. तो अब प्रेस्क्राइब जैसा कुछ स्कोप रखा नहीं, दो वी हैव अ रूल 37 विद अस. रूल 37 में ऑलरेडी इन सब चीजों पे लिखा गया है, बट इन्होंने यहाँ पे सेक्शन 50 भी स्पेसिफिकली कोट कर दिया है इंटरेस्ट के लिए. In such manner as may be prescribed, so that the wordings have been prescribed or the manner has been prescribed in rule 37. तो वो तो रूल अपनी जगह पर है, लेकिन यहाँ सेक्शन में इस तरीके का अमेंडमेंट इन्होंने किया है कि आपको आईटीसी पे करना, आईटीसी के इक्विवेलेंट अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा. एक सेकंड चेंज यहाँ पे ये क्या लेकर आए हैं, जब थर्ड प्रोविजो को आप रीड करेंगे, इट सेज दैट provided also that the recipient shall be entitled to avail the credit of input tax on the payment made by him amount towards the value of the supply along with the tax payable. तो ये क्या बोल रहे हैं कि जब as and when you make the payment you can take the credit, right? So 180 days के बाद में, say for an example in that particular instance where we are saying that on or before 27th of December, if a recipient does not make if a recipient is failed to make the payment to the supplier, then in that case he will have to pay the amount equivalent to ITC which has been availed by him, right? Now मान लीजिए आपने पेमेंट नहीं किया दिसंबर तक, then what you have to do, you have to pay that amount. तो आप वो GSTR 3B जब फाइल करेंगे दिसंबर का जनवरी में, तो आपको अमाउंट पे करना है. बट अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है उसको समझिए. ये बोलते हैं मान लीजिए आपने जनवरी में जाके अपने सप्लायर को पेमेंट कर दिया, तो जनवरी का जो रिटर्न आप फरवरी में फाइल करेंगे उसमें आप उस क्रेडिट को क्लेम कर सकते हैं जो आपने रिवर्स किया था या जिसका पेमेंट आपने किया था. तो दिस इज अनदर सेट ऑफ प्रोविजन विद अस. तो ये एक अच्छा प्रोविजन भी है कि आप पे कर दो और क्रेडिट ले लो, उसके लिए कोई टाइम लाइन नहीं. नाउ चेंज क्या लेकर आए, इन्होंने बोला है ऑन पेमेंट मेड बाय हिम टू द सप्लायर. सो द रेड फॉन्ट्स आर स्टेटिंग द चेंजेस, राइट? तो क्या चेंज हुआ है वो आपको यहाँ से मिल रहा है. तो दिस इज द इंसर्शन इन द थर्ड प्रोविजो ऑफ सेक्शन 16 सबसेक्शन 2, saying that the recipient shall be entitled to avail the credit of input tax on the payment made by him to the supplier. So to the supplier is absolutely missing here in the existing set of provision, but now with the proposed changes, it is stated that you will have to make the payment to the supplier. Now the question arises, say you are the supplier, okay, and you have supplied the goods to me, say of rupee 100, 18 rupees is the tax rate, so 100 plus 18. If I do not make the payment within 180 days from the date of the issue of invoice, what I am supposed to do after expiry of 180 days, I will have to pay that particular amount which is equivalent to ITC. तो 18 rupees मेरे को पे कर. Now ये क्या बोल रहे हैं, आपको क्रेडिट रीअवेल करने को मिलेगा if you make the payment to the supplier. तो अब पार्लियामेंट seems to specify that you will have to make the payment to the supplier only. Now I have a big reservation on this. If on your instruction, if I made the payment to party X, of course it should be treated as if I have made the payment to you. So upon your instruction, if I am making the payment to X person, as per the commercial prudence and as per the Indian Contract Act, it does not differentiate the position. The position is as good as you, as good as same only. Either I pay to you or I pay someone else upon your instruction. The position is same that I am making the payment to the supplier only. तो आपके इंस्ट्रक्शन पे किसी और को पे किया तो भी वो सप्लायर को ही पेमेंट किया गया माना जाता है. तो अब I don't know in what
way department will take this particular meaning, okay, where I am not making the payment to the supplier but to the person on the instruction of the supplier, whether it should be taken in on the same line. अगर ये सेम ही लाइन पर है तो फिर ये चेंज प्रपोज करने का कोई मतलब नहीं था. दिस इज ऑल्सो अ पॉइंट. तो हो सकता है डिपार्टमेंट इसको बहुत ही स्ट्रिक्टली और बहुत ही नैरो तरीके से उसको इंटरप्रीट करे और एक नया सेट ऑफ लिटिगेशन हम लोगों के सामने आ जाए. तो ये एक चेंज हमारे सामने सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 में किया. नाउ अनदर चेंज in section 17 subsection 2. Section 17 subsection section 17 subsection 2 subsection 3 and explanation thereof. Section 17 2 क्या बोलता है? If a registered person makes the if the registered person uses the goods or services or both commonly for the purpose of effecting taxable and exempt supply. अगर आप गुड्स या सर्विसेज को कॉमनली यूज कर रहे हो टैक्सेबल एंड एग्जम्प्ट के लिए, तो ऐसे केस में आपका आईटीसी प्रोपोर्शनेटली ही आपको अलाउ होगा. ऑब्वियसली इफ योर गुड्स इज बीइंग यूज्ड 100% फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग द टैक्सेबल सप्लाई ओनली, देन इन दैट केस द आईटीसी शुड बी अलाउड टू द एक्सटेंट ऑफ 100% अनलेस इट इज disqualified. Right, and if you are using the goods or services for the purpose of making the exempt supply only, so then in that case the ITC should not be allowed. But if you are using the goods or services of both for the purpose of effecting taxable and exempt both, तो यहाँ हमने एक मिड वे निकाला है, and that is nothing but the proportionate reversal of the ITC. प्रॉब्लम क्या है कि वो जब कॉमन आईटीसी को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और कॉमन आईटीसी को डिवाइड करेंगे इन द टैक्सेबल एंड एग्जम्प्ट प्रोपोर्शन में, तो वो किस बेसिस पे होता है? तो वो वैल्यू के प्रोपोर्शन में होता है कि पर्टिकुलर टैक्स पीरियड में आपका वैल्यू ऑफ एग्जम्प्ट सप्लाई कितना है, टैक्सेबल वैल्यू एग्जम्प्ट सप्लाई कितना और टैक्सेबल सप्लाई कितना है. तो टर्नओवर के प्रोपोर्शन में आपका कॉमन आईटीसी का रिवर्सल होता है एट प्रेजेंट, और वही पोजीशन आगे भी. लेकिन अभी इन्होंने क्या किया है, exempt supply की वैल्यू का दायरा बढ़ा दिया है. So they are expanding the scope of the value of exempt supply. This is also very disheartening. आगे जाके इस पर और थोड़ा डिस्कशन डिटेल में करेंगे. तो इन्होंने अभी क्या किया है, exempt supply की वैल्यू में कुछ उसकी स्कोप को और बढ़ा दिया है. और उन्होंने क्या बोला है, just read this explanation. For the purpose of this subsection, the expression value of exempt supply shall not include the value of activities of transactions specified in Schedule 3. तो ये बोल रहे हैं कि Schedule 3 value of exempt supply नहीं है, लेकिन Schedule 3 की आज की तारीख में जो प्रेजेंट प्रोविजन बोलते हैं except the para 5 of the Schedule 3. तो Schedule 3 क्या है वो भी समझना पड़ेगा. Schedule 3 is nothing but activities which should neither be treated as supply of goods or nor to be treated as supply of services. जो चीजें सप्लाई, जो एक्टिविटी सप्लाई नहीं मानी गई है, उसमें से सिर्फ एक आइटम ऐसा है जिसको वैल्यू ऑफ एग्जम्प्ट सप्लाई के स्कोप में कंसीडर किया जा रहा है. And you are surprised to know that activity which is not treated as supply will still forming part of the value of exempt supply. तो जो चीज खुद ही सप्लाई नहीं है वो exempt supply की वैल्यू का पार्ट बनती है, और वो आज की तारीख में सिर्फ एक ही एक्टिविटी है. Please take care that Schedule 3 is is having the activities having serial number 1 to 8B, 1 2 3 4 5 6 7 8A 8B. तो इतनी एक्टिविटीज ऑलरेडी स्पेसिफाइड है जो किसी भी तरीके से सप्लाई नहीं मानी गई, लेकिन उसमें एक आइटम है पैरा 5 का जो एग्जम्प्ट सप्लाई की वैल्यू में शामिल किया जा रहा है. पैरा 5 ऑफ Schedule 3 क्या बोलता है? पैरा 5 ऑफ Schedule 3 बोलता है सेल ऑफ लैंड, कोमा सब्जेक्ट टू पैरा 5B ऑफ subject to para 5B of sale of building, right? तो जब भी आप आफ्टर कंप्लीशन किसी प्रॉपर्टी, किसी बिल्डिंग को आप सेल कर रहे हैं, फ्लैट को सेल कर रहे हैं, यूनिट को सेल कर रहे हैं, तो ऐसे केस में वो खुद भी सप्लाई नहीं है.
लेकिन अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी अगर कर रहे हैं तो ऐसे केस में अंडर कंस्ट्रक्शन के केस में आपकी कंस्ट्रक्शन सर्विसेज जो है वो टैक्सेबल मानी गई है, राइट। इस बैकग्राउंड के साथ इस चीज को समझिए। लॉ स्टेट्स दैट सेल ऑफ लैंड शुड नॉट बी ट्रीटेड एज अ सप्लाई एंड सेल ऑफ बिल्डिंग आफ्टर द कंप्लीशन सर्टिफिकेट should also be treated as a should also not नहीं हमें राइट। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है एक तरीके से लॉ ये बोल रहा है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी सप्लाई के दायरे में, सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अपने आप में सप्लाई के दायरे में नहीं। एक ऐसा यहाँ से एक इंटरप्रिटेशन, मतलब आप इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं इंटरप्रिटेशन। अब इन्होंने इस स्कोप को कैसे बढ़ाया है? आज की तारीख में इन्होंने ये बोल दिया है कि एग्जाम सप्लाई में एक चीज शामिल होगी, सेल ऑफ लैंड एंड सेल ऑफ बिल्डिंग आफ्टर कंप्लीशन। अब इस स्कोप में एक चीज और ऐड कर दी है। सर, ऑर्गेनाइजर्स आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज म्यूट इट ऑफ। नो, इट इज वेरी पैथेटिक अगेन टू हैव अ फोकस ऑन दीस, क्योंकि दीस प्रोविजंस आर, इतना आसान नहीं है प्रोविजंस पे अच्छे से कमेंट करना, राइट। तो पहले तो मेरे सामने बहुत ही लेमेन बैकग्राउंड वाले लोग भी हैं, तो मुझे बहुत ही बेसिक से उन चीजों को उठा के इन प्रोविजंस को समझाना है। Unless I do focus on these things, and it will be very cumbersome for me to make it. Organizers, please. Again and again, I am requesting to keep it on mute. I am waiting. Please. Shall I go further? Okay. Now, section 17 says that अब जो प्रपोज चेंज आ रहा है वो बोल रहा है वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई में सिर्फ और सिर्फ सेल ऑफ लैंड और सेल ऑफ कंप्लीटेड प्रॉपर्टी ही नहीं, बल्कि एक और एक्टिविटी साथ में आ जाएगी, दैट इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ सच एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शंस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड इन पैरा 8A ऑफ द शेड्यूल 3। अब आप देखिए टेक्निकल वर्डिंग्स है, मैं बहुत सिंपलीफाई वे में बताता हूँ ये क्या बोलना चाह रहे हैं। तो वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई शैल इंक्लूड द वैल्यू ऑफ activities specified in para 8A of schedule 3। तो para 8A of schedule 3 क्या है? वो बोलते हैं कि कस्टम बॉन्डेड गुड्स जो है, कस्टम बॉन्डेड वेयरहाउस गुड्स, कस्टम के वेयरहाउस में जो गुड्स पड़ा है जिसका क्लियरेंस हमने नहीं कराया, तो क्लियरेंस से पहले ही अगर आपने गुड्स को किसी एक्स पार्टी को बेच दिया है, चाहे वो इंडिया का पर्सन हो चाहे वो आउटसाइड इंडिया का पर्सन हो, तो ऐसे केस में वो सप्लाई ही नहीं होती है। बट फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमिनिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ द वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई, दिस शैल बी फॉर्मिंग पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। तो जैसे जैसे एग्जाम सप्लाई का प्रोपोर्शन बढ़ेगा वैसे वैसे कॉमन आईटीसी का रिवर्सल भी बढ़ेगा। तो पार्लियामेंट अब आगे जाके, मतलब अभी तो मैं पार्लियामेंट नहीं बोल सकता हूँ, अभी जो प्रपोज चेंज के माध्यम से ये समझाया जा रहा है कि कस्टम बॉन्डेड वेयरहाउस गुड्स को अगर आपने सेल किया है तो वो वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई में शामिल किया जाएगा, और जैसे ही वो शामिल किया जाएगा ऑफ कोर्स दैट विल बी अ रीजन ऑफ कॉमन क्रेडिट रिवर्सल टू द हायर एक्सटेंट। तो लॉ ने पैरा 8A को यहाँ पे कंसीडर किया। प्लीज टेक केयर, मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ऑब्जर्वेशन पे दे रहा हूँ। We have para 7, 8A, 8B। 7 क्या बोलता है? नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में कोई सप्लाई आपने किया है, से you have purchased the cricket bat from Australia and you have sold the same to New Zealand। तो आपने क्या किया है? You have supplied the goods in non taxable territory from non taxable territory। तो ऐसे केस में India should not be concerned of this। All right,
तो जो नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में आपने सप्लाई किया है तो वो अपने आप में सप्लाई ही नहीं है, which is very pertinent. This 8A is saying that custom bonded warehouse goods, मतलब अगर कस्टम वेयरहाउस से ही अगर वो क्लियर नहीं हुआ है तो एक तरीके से वो इंडियन टेरिटरी में नहीं है, और नहीं है तो उस पर भी वो भी सप्लाई नहीं कहा जाना चाहिए। वी हैव अनदर एंट्री 8B which talks about high sea sales. हाई सी सेल्स क्या होता है? जब आप इंपोर्ट कर रहे हैं, और इंडियन टैक्सेबल टेरिटरी में एंटर होने से पहले ही, ओवरसीज से रिमूव होने के बाद, बट टेरिटरी में एंटर होने से पहले ही अगर वो गुड्स को आप सेल कर देते हो, तो इन ट्रांजिट अगर आप उसको सेल कर देते हो, वो हाई सी सेल का कहलाता है। सो दैट हाई सी सेल्स, और उस आपने हाई सी सेल को क्या किया, बाहर से बाहर ही उसको सेल कर दिया, तो इन दैट केस अगेन इंटेंट वही है कि नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू नॉन टैक्सेबल टेरिटरी। तो हाई सी सेल शुड आल्सो नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ एग्जाम्पल, should not be treated as a supply as such. तो अभी इन्होंने इन तीन एक्टिविटी में सिर्फ 8A को वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई के दायरे में लिया है। 7 और 8B वाली जो एक्टिविटीज हैं, these are not forming part of, these are neither to be treated as a supply nor should be forming part of the value of exempt supply for the purpose of common credit reversal. So again, a very important and interesting observation. Now another interesting provision or amendment, that is corporate social responsibility. So if you are incurring any expenditure for the corporate social responsibility and on the procurement of the goods or services, or both as the case may be, is being received by a company for the purpose of CSR activity. So CSR activity नाम पे आप कुछ कर रहे हो और गुड्स या सर्विसेज आप रिसीव कर रहे हैं, in that case the input tax credit, the incidence of input tax credit shall not be allowed to you. So if you are a company, you are liable to incur those expenditures as per section 135 of the Companies Act 2013. In that case the ITC on such procurement shall not be allowed to you. And interesting observation is this, that it is talking about the activities relating to his obligation under CSR as referred to in section 135. So if a company is incurring the expenditure for the social responsibility which is beyond the obligations as laid down under section 135 of the Companies Act, then in that case the credit is not denied. Please try to understand the section 135 corporate social responsibility related provisions are not applicable to every company. This is applicable to 3 types of companies having the net worth of rupees 500 crore or more in the immediately preceding financial year, or having turnover of 1000 crore or more in the previous financial year, or net profit of 5 crore or more in the previous financial year. If any of these condition is satisfied, 500 crore या उससे ज्यादा का नेटवर्थ, 1000 करोड़ या उससे ज्यादा का टर्नओवर, 5 करोड़ या उससे ज्यादा का नेट प्रॉफिट पिछले साल में कहीं किसी भी पर्टिकुलर कंपनी को, वेदर इट इज प्राइवेट और पब्लिक कंपनी, तो ऐसे केस में उनको अपने पिछले 3 साल का एवरेज नेट प्रॉफिट का 2% CSR पे खर्च करना होता है। तो अभी क्या है, मान लीजिए कंपनी एक्स लिमिटेड इज देयर और उनका से नेट प्रॉफिट 5 करोड़ और मोर हो गया है पिछले फाइनेंशियल ईयर में, से 22-23 में, तो उनको क्या करना पड़ेगा करंट फाइनेंशियल ईयर में 23-24 में उनको 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट का खर्चा करना पड़ेगा CSR एक्टिविटी में, जो सेक्शन 135 के हिसाब से। नाउ मान लीजिए उन्होंने जो फाइनेंशियली चैलेंज्ड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ड्रेसेस परचेज करी, तो जब ड्रेस परचेज करोगे तो कपड़ा खरीदोगे
ओके एक तो फैब्रिक भी हो सकता है और आपने शर्ट भी परचेज कर लिया से पैंट परचेज कर लिया व्हाटएवर so the tax amount is always there on that right now if the tax is there the credit shall not be allowed so procurement पे जो कुछ भी टैक्स लग रहा है तो ऐसे जीएसटी का क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा ये बोल रहे the interesting point is if you are incurring the expenditure for the goods or services or both then in that case ITC ITC is not disallowed voluntarily आप कर रहे हैं तो disallowed नहीं है because the wording says that to his obligations under CSR referred to in 130 तो अगर बिना ऑब्लिगेशन के या ओवर एंड अबाउट 2% ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट से मान लो किसी ने 2.5 किया तो 0.5 वाले खर्चे पर ये क्रेडिट एलोकेट क्रेडिट डिसअलाउड नहीं है नो व्हाई दिस प्रोविजन हैज बीन let down because number of advance rulings or AAAR were giving the judgments in favor as such that the credit is not disentitled. Under section 17.5 there was a single provision where it says that the goods or services if the goods are given in free or gift okay free sample or gift then in that case the credit is not allowed. This is the provision existing provision under section 17.5 so government was having a view that goods is being given in free or gift right so the credit should not be allowed. Now taxpayers were having a different view that it should not be treated as a free sample it should also not be treated as a gift right because gift is given voluntarily and if by virtue of law if someone is incurring the expenditure the same should not be treated as a gift and taxpayers were having different a strong position in that interpretation. So now parliament now it is proposed to insert a particular prohibition as such to take the credit on that. Now another set of provision for registration. See existing schema of registration. Organizers please let me know how much time I do have. Hello? Hello, sir? Hello? I think organizers are also... Sir, how much time I do have? $20 minutes, okay. Okay. Till 1:30, like you have 1 hour. Sorry? It's session time is till 1:30, so you have 1 hour. Oh, okay. Thank you. Thank you. Thank you. So now we are discussing about the changes brought in respect of the registration. See, at present again, whenever you want to understand the impact of the change, you have to understand the existing provisions, right? So, sir, background जब तक आप नहीं समझेंगे, you won't be able to digest the change also. So, I am giving a background of the proposed change in respect of the registration. GST under GST law, there are two sets of provisions which state about the liability to registration under GST. One section that is section 22, another is section 24. Section 22 subsection 1 says that a person is liable for registration in a state from where he makes a taxable supply.
a person is liable for registration in a state from where he makes a taxable supply in a case where the aggregate turnover exceeds the threshold limit, that is 20 lakh or 10 lakh. तो अगर आपका फाइनेंशियल ईयर में 20 लाख और 10 लाख का एग्रीगेट टर्नओवर क्रॉस कर जाता है तो ऐसे केस में उसको उस स्टेट में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा जिस स्टेट से वो टैक्सेबल सप्लाई करता है. दिस इज द फर्स्ट सेट ऑफ प्रोविजन. अनदर सेट ऑफ प्रोविजन इज सेक्शन 24. So section 24 is having, I suppose, 11 clauses, and which says that कि अगर कोई पर्सन इन 11 और प्रिस्क्राइब सिचुएशन में फॉल कर जाता है तो ऐसे केस में उसको हर हाल में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा रिगार्डलेस ऑफ हिज एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट. लाइक a provision another first provision which says under section 24 that if a person is engaged in interstate taxable supply of the goods, right? तो अगर इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स में आप इंगेज्ड हैं तो आपको हर कोई मतलब पहली इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई पर ही आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है बिकॉज द थ्रेशोल्ड लिमिट इज नॉट देयर. सो इफ यू आर मेकिंग द इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स यू आर लायबल टू गेट रजिस्टर्ड. तो एक प्रोविजन तो हमारे पास में थ्रेशोल्ड लिमिट का है, दूसरा सेट ऑफ प्रोविजन बोलता है कि हर हाल में आपको रजिस्ट्रेशन लेना है. This was the first example. Another provision we have, if you are liable to pay the tax under reverse charge mechanism, you have to obtain the registration mandatorily. And likewise, we have number of provisions which are which do require a person to get it registered under GST law. So section 22 plus section 24. Both of the provisions do talk about registration. Now we have another relaxation in section. We have relaxation in section 23. Section 23 says that persons are not liable for registration. Section 23. Persons are not liable for registration. So certain situations are mentioned, and under section 23, where the person is not liable for registration, right? अब प्रॉब्लम क्या हो रहा था कि सेक्शन 24 ट्रिगर हो रही थी या सेक्शन 22 ट्रिगर हो रही थी और साथ ही साथ में सेक्शन 23 ट्रिगर, या तो मतलब हो क्या रहा था, एप्लीकेबिलिटी भी ट्रिगर कर रही थी और नॉन एप्लीकेबिलिटी भी ट्रिगर कर रही थी. एप्लीकेबिलिटी इज मेंशन अंडर सेक्शन 22 और 24 और नॉन एप्लीकेबिलिटी इज मेंशन अंडर सेक्शन 23. और 23 क्या बोलता है कि कुछ सर्टेन सिचुएशंस में कुछ सर्टेन सिचुएशन में फॉल करने पे पर्सन इज नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन. और 23 में भी फॉल कर रहा है, ऐसे 22 में भी फॉल कर रहा है. तो ये डिबेट का पॉइंट हो रहा था कि फिर उसको रजिस्ट्रेशन लेना है या नहीं लेना है, क्योंकि एप्लीकेबिलिटी भी खींच रही है और नॉन एप्लीकेबिलिटी भी अपनी तरफ उसको अट्रैक्ट कर रही है, राइट? just to make the intention satisfied, the proposed change brings the amendment in the wordings of section 23, and the opening wording says, notwithstanding anything to the contrary contained in 22 subsection 1 or section 24. कि 22 और 22 सबसेक्शन 1 और 24 में कुछ भी क्यों ना लिख रखा हो, ये पर्सन को रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल नहीं. अब इन्होंने ये लिखा है कि नॉट विद स्टैंडिंग, मतलब 24 22 में भी ट्रिगर क्यों ना करता हो वो पर्सन लायबल नहीं. रेस्ट ऑफ द प्रोविजंस आर ऑलमोस्ट सेम. तो 23 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए एग्जिस्टिंग रीडिंग आप पढ़ेंगे तो वो क्या बोलता है, the person who is engaged exclusively in the business of supply of the goods or services or both that are not liable to tax or wholly exempt. तो अगर आप wholly exempt supply में डील करते हो और अगर आप interstate supply, अगर आप रिवर्स चार्ज का कोई इनवर्ट सप्लाई ले लेते हो, कोई प्रोक्योरमेंट ऐसा कर लेते हो जो रिवर्स चार्ज में विच इज सब्जेक्ट टू रिवर्स चार्ज, तो वो क्या हो रहा है, 24 में भी जा रहा है और 23 में भी जा रहा है. ऐसे केस में बिकॉज अब ये वर्डिंग्स को एनिमली दूर करने के लिए उन्होंने लिख दिया है
notwithstanding anything to the contrary contained in 22(1) or 24, the person shall not be liable for registration. तो उन्होंने बहुत ही क्लियरली इन चीजों को लिख दिया है। तो अभी यहाँ से क्लियर हो गया कि चाहे रिवर्स चार्ज का भी वो सप्लाई क्यों ना लेता हो, अगर वो 23 में फॉल करता है तो उसको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है। तो 23 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी को भी एक बार रीड करते हैं। वो बोलता है एग्रीकल्चर इज टू द एक्सटेंट ऑफ द सप्लाई ऑफ द प्रोड्यूस आउट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ लैंड। तो एक किसान जो है वो अपनी खेती से जो खेती की जो उपज होती है उससे निकले हुए कोई भी पर्टिकुलर प्रोड्यूस को अगर सप्लाई करता है तो उसको किसी भी केस में रजिस्ट्रेशन की लायबिलिटी नहीं। प्रॉब्लम ये है कि अगर वो आरसीएम की सप्लाई कोई लेता है, उसका कोई खर्चा ऐसा है जो आरसीएम का खर्चा है, देन व्हाट विल हैपन? तो उन्होंने बोल दिया ऐसे एग्रीकल्चरिस्ट को किसी भी केस में रजिस्ट्रेशन की लायबिलिटी नहीं। ओके, इट्स आल्सो एन इंटरेस्टिंग पॉइंट। ओके, इस पे कई सारे इश्यूज हैं, क्योंकि अब अगर इसको बहुत ही प्लेन रीडिंग से लेंगे तो यू विल बी एबल टू नोटिस कि रजिस्ट्रेशन की लायबिलिटी से उसको रिलीव किया है, क्या उसको टैक्स पेमेंट की लायबिलिटी में कवर फिर भी रहेगा या नहीं रहेगा। तो आने वाले टाइम में ऐसे डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व किया जाना पड़ेगा, क्योंकि जो चीज रिवर्स चार्ज में है वो है, और जो चीज नॉन एप्लीकेबिलिटी और रजिस्ट्रेशन में वो भी है। तो क्या अनरजिस्टर्ड रहते हुए भी उसको लायबिलिटी का पेमेंट करना है? इन टाइम्स टू कम दीस क्वेश्चंस विल बी देयर बिफोर द country, and I hope that government will come up with the suitable circulars of clarification in this regard. So another change is there before us in this name. Now we have the compliance related amendments in 4 provisions: section 37, 39, 44, 52. 37 is for GSTR 1, 39 is for GSTR 3B, section 44 is for GSTR 9, and section 52 is for GSTR 8. GSTR 8 is nothing but a return to be furnished by e-commerce operators. Okay. तो अभी आज की तारीख में प्रोविजन क्या बोल रहे हैं? आज की तारीख में प्रोविजन ये बोल रहे हैं दैट वन हैज टू फर्निश, रजिस्टर्ड पर्सन हैज टू फर्निश द स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई अंडर सेक्शन 37 और ऑन और बिफोर द ड्यू डेट। और अब ड्यू डेट के बाद में फाइल फर्निश करते हो तो आपको लेट फीस पे करना है, इंटरेस्ट पे करना है और अदर कॉन्सिक्वेंसेस जो लॉ में लिखा है। ऐसे ही 39 में बोल रखा है कि आपको ऑन और बिफोर 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, और QRMP के केस में आपको 22nd और 24th को आपको पे करना पड़ता है। जैसे ही क्वार्टर फिनिश होता है आपको 22 और 24th को GSTR 3 भी फर्निश करना पड़ता है। सेक्शन 44 इज फॉर द एनुअल रिटर्न GSTR 9 एंड 9C। इट सेज दैट आपको GSTR 9 एंड 9C फर्निश करना है फॉलोइंग फाइनेंशियल, मतलब फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद का जो 31st, दैट मींस से 22-23 फाइनेंशियल ईयर का GSTR 9 और 9C फर्निश करने की ड्यू डेट है, दैट इज 31st ऑफ दिसंबर 2022। 22-23 तो 31st ऑफ दिसंबर 2023, 21-22 के लिए 31st ऑफ दिसंबर 2022। तो ये ड्यू डेट्स आर मेंशन्ड इन द लॉ कि फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर के 9 महीने के, मतलब नॉट 9 महीना, फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर के 31st दिसंबर को ऑन और बिफोर द 31st दिसंबर यू हैव टू फर्निश GSTR 9। ऐसे ही हमारे पास में GSTR 8 है, उसकी अपनी ड्यू डेट है। तो ये अब लॉ क्या बोल रहा है? लॉ ये बोल रहा है कि हमने ड्यू डेट दी है लेकिन मैक्सिमम डेडलाइन भी नहीं दी। It is as opposed to income tax. Income tax में you are provided the due date and the late filing date also. कि आप late filing भी करना चाहते हैं तो उसकी भी अपनी एक समय सीमा है। Now in GST law we do not have such kind of thing with us, और वहां बस ये है कि आपकी ये ड्यू डेट है, ड्यू डेट के बियॉन्ड जाके आप फाइल करते हो, you'll have to have the consequence. Proposed change mentions about the maximum timeline कि आपको लेट भी होना है तो उसके एक पीरियड के बाद में आप लेट का सहारा नहीं ले पाएंगे। तो उन्होंने अभी बोल दिया है कि आपको 3 years from the due date of that particular form
तक आप फाइल कर सकते हो। तो जून का अगर आप रिटर्न फाइल करते हैं 20 जुलाई से 2022, तो अब 20 जुलाई 2023 से फॉर एग्जाम्पल, राइट, मान लीजिए कि ये प्रोविजन इनेक्ट हो जाता है ऑन और बिफोर दिस डेट, तो और इफेक्टिव डेट आ जाती है, राइट। तो अब मान लीजिए कि जीएसटीआर 3B जून का आपने वो जुलाई 20 तक भरना है, आपने वो भरा नहीं, तो अभी 2023 जुलाई की जो 20 जुलाई 2023 है, तो वो हमारी ड्यू डेट है। लेकिन मैक्सिमम टाइमलाइन क्या रहेगी, दैट इज 20 जुलाई 2026 इज द लास्ट डेट। तब तक ही आप इसको रिटर्न को फाइल कर पाएंगे। अब आप ये कहेंगे कि सर लॉ में तो ऑलरेडी कई सारे रेस्ट्रिक्शंस उन्होंने दिख दिए हैं, अभी आप 37 को पढ़िए, 39(9) को पढ़िए, रूल 138E को पढ़िए। उन सबका कंफ्यूजन क्या है कि प्रीवियस मंथ का अगर आपने टैक्स पीरियड का जीएसटीआर 1 फाइल नहीं किया है, तो इस महीने आप जीएसटीआर 1 फाइल नहीं कर सकते, 3B भी फाइल नहीं कर सकते। पिछले महीने का 3B फाइल नहीं किया, तो इस मंथ का आप 1 और 3B फाइल नहीं कर सकते। तो ये रेस्ट्रिक्शंस ऑलरेडी है। लेकिन at the same point of time we have section 29 with us for the cancellation of registration. Cancellation of registration ये बोलता है कि consecutive 6 months के अगर रिटर्न फाइल नहीं हुए हैं for a person other than a composition registered person, तो ऐसे केस में आपको आपका रजिस्ट्रेशन प्रॉपर ऑफिसर कैंसिल कर सकता है इफ यू डू नॉट फर्निश द रिटर्न फॉर consecutive 6 टैक्स पीरियड, when you are normal registered person, तो प्रॉपर ऑफिसर में कैंसिल द रजिस्ट्रेशन। तो ये ऑलरेडी हमारे सामने कॉन्सिक्वेंसेज हैं। लेकिन अगर रजिस्ट्रेशन रिवोकेशन में भी ले जाना है आपको, ओके, तो रजिस्ट्रेशन रिवोकेशन के लिए भी आपको रिटर्न तो फाइल करना है। अब प्रॉब्लम ये है कि जब मैटर अपील में चल रहा हो रेवोकेशन का, और वो ऑलरेडी 3 साल से ज्यादा का समय ले चुका हो उसकी ड्यू डेट से, तब रेवोकेशन एज पर सेक्शन 30, तो रेवोकेशन तभी हो सकता है, रूल 23 एंड सेक्शन 30, ओके, रेवोकेशन तभी हो सकता है व्हेन यू फर्निश द रिटर्न्स। until you furnish your returns, the pending returns you want, आपका रजिस्ट्रेशन कभी भी रेवोकेशन, कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन कभी भी रिवोक नहीं हो सकता। तो एक तरफ इन्होंने टाइमलाइन डाल दिया 3 years from the due date of furnishing the said statement, and on another side they have their other set of provisions। तो अब 3 साल के बाद में अगर उसका अपील कंसीडर हो रहा है और रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन होना परमिट हुआ है, तो ऐसे केस में जब तक वो फाइल ही नहीं हो पाएगा ड्यू टू दिस पर्टिकुलर टाइम लिमिट, तो रेवोकेशन कैसे होगा। तो ऐसी सिचुएशंस को मुझे लगता है कि इस प्रोवाइजो से कवर किया जाएगा इन टाइम्स टू कम, कि कुछ सिचुएशंस वो लोग जब ऑब्जर्व करेंगे उन सिचुएशंस को वो एक्सेप्शंस में डालेंगे कि ऐसे केस में आप रिटर्न फाइल कर दीजिए। तो आप ये देखेंगे हमारे पास में जो सेक्शन 39 का रिटर्न है, वो 39 सबसेक्शन 11, वहां इन्होंने लिखा है प्रोवाइडेड दैट द गवर्नमेंट मे ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल बाय नोटिफिकेशन सब्जेक्ट टू such conditions and restrictions as may be specified therein, allow a registered person or class of registered person to furnish the return for a tax period even after the expiry of said 3 years। तो आप even after the expiry of 3 years from the due date भी फाइल कर पाएंगे उन सिचुएशंस में जो गवर्नमेंट ने नोटिफाई करनी है। तो अभी तो सेक्शन ही इनेक्ट नहीं हुआ है, तो नोटिफिकेशन कहाँ से आएगा। बट हाँ, यस, गवर्नमेंट शुड कीप दिस पर्टिकुलर सिनेरियो इन देयर माइंड so that they can come up with such kind of relaxations, right? तो ये भी एक कंप्लायंस का, तो हमने अभी तक देखा है सप्लाई के स्कोप में जाके सेक्शन 16 में जाके उन्होंने क्या किया आईटीसी को लेकर, राइट। सेक्शन 17 में उन्होंने प्रोपोर्शनेट क्रेडिट पे क्या किया, उन्होंने ब्लॉक क्रेडिट पे क्या किया, सीएसआर एक्टिविटी, राइट। उसी तरीके से इन्होंने कंप्लायंस वाली प्रोविजंस में भी एक रेस्ट्रिक्शन इंपोज किया है। नाउ another set of provisions, section 54. Section 54 is for refund. Please take care that parliament allows the refund under section 54
in two cases. 54 subsection 3 को अगर आप read करेंगे तो they provide two cases. In case of zero rated supply of the goods or services or both, or in case of inverted duty structure. तो यहाँ आपको इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर क्या है कि आपकी आउटवर्ड सप्लाई इनवर्ड सप्लाई की रेट, इनवर्ड सप्लाई का जो रेट है आपका जो परचेज होता है सिर्फ 5% पे और सेल होता है 12% पे, ठीक है, तो वो इन्वर्टेड नहीं है। इन्वर्टेड क्या, परचेज होता है 12 पर और सेल होता है 5 पर, राइट। तो मान लीजिए आपने यार्न परचेज किया 12% रेट और सेल करते हो फैब्रिक को 5% पर, तो ऐसे केस में इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर होता है। एक हमारा जीरो रेटेड सप्लाई, जीरो रेटेड सप्लाई आर ऑफ टू टाइप्स, when it is the case of export of the goods or services or both, and the another type of zero rated supply is when you supply the goods or services or both to the SEZ, special economic zone unit or developer, SEZ unit और SEZ developer। तो जब जीरो रेटेड सप्लाई है या जब इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में आप फॉल करते हो और अगर आपको वहाँ प्रेस्क्राइब गुड्स के अलावा सब में परमिशन है, तो ऐसे केस में आपको रिफंड ग्रांट किया जा सकता है एज पर द मैकेनिज्म। आई एम सॉरी। नाउ सेक्शन 54 सबसेक्शन 6 प्रोविजनल रिफंड के बारे में बात करता है। इट सेज कि आप अगर जीरो रेटेड सप्लाई में एंगेज्ड हो, then in that case you may apply for the refund in RFD 01 and within 7 days of your application 90% of the refund shall be granted by the proper officer on a provisional basis and 10% shall be retained। फिर वो अपना एक ड्यू प्रोसेस परफॉर्म करेंगे और आइडियली उनको विदिन 60 days from the date of the filing of the application उनको रिफंड करना होता है। ओके, तो 60 डेज के अंदर अंदर उनको रिफंड देना होता है। बट सेक्शन 54 सबसेक्शन 6 ये बोल रहा है कि प्रोविजनल बेसिस पे आपको 90% ऑफ द टोटल अमाउंट सो क्लेम्ड का रिफंड मिल जाता है। और यहाँ जो वर्डिंग है वो लिखा है एक्सक्लूडिंग द अमाउंट आईटीसी प्रोविजनली एक्सेप्टेड। ओके, तो अमाउंट क्लेम्ड एक्सक्लूडिंग द अमाउंट ऑफ आईटीसी प्रोविजनली एक्सेप्टेड, ये प्रोविजन हमारे सामने सेक्शन 54 सबसेक्शन 6 में। अब चेंज क्या है? चेंज ये है कि इस वर्डिंग को एक्सक्लूडिंग द अमाउंट ऑफ आईटीसी प्रोविजनली एक्सेप्टेड को ऑमिट कर दिया है, ऑमिट कर दिया है इसको। ओके, क्यों किया है? बिकॉज आईटीसी प्रोविजनल एक्सेप्टेंस का खुद का कंसेप्ट ही अभी आज की तारीख में लॉ में नहीं रह गया है। So provisional acceptance of ITC was there in section 41 which is already omitted। तो उसका एक corresponding जो alignment section 54(6) में otherwise था, तो बहुत ज्यादा इसके अंदर कुछ समझने जैसा नहीं है। पॉइंट इतना ही है कि जो एनोमली आज की तारीख में प्रोविजन में रह गई थी, which is already a redundant situation that there is no provisional acceptance of ITC। 90% of the amount refunded, or 90% of the amount claims shall be refunded on a provisional basis within 7 days। तो ये 7 days का टाइमलाइन जो रूल 91 आप रेफर करेंगे तो आपको मिल जाए, ठीक है। तो कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है, बट ये एक एनोमली दूर करने के लिए उन्होंने ऐसा किया। नाउ section 56 that talks about interest। As I was mentioning that within 60 days from the date of 60 days from the date of the receipt of application, proper officer should give the refund to the taxpayer। Now यहाँ वर्डिंग क्या है आप देखिएगा। Law says that if any tax order to be refunded under section 54(5) to any applicant is not refunded within 60 days from the date of the receipt of the application under section 54(1), तो अगर किसी ने अप्लाई किया है 54(1) में और उसने 60 डेज में उसको रिफंड नहीं किया है, in that case interest at the rate not exceeding 6% shall be payable in respect of such refund from the date immediately, very important, from the date immediately after the expiry of 60 days
from the date of the receipt of application under the said subsection till the date of the refund of such pay. तो यहाँ इन्होंने बताया कि रिफंड कब से कब तक का दिया जाएगा, फ्रॉम द डेट इमीडिएटली आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 60 days, from the date of the receipt of application under subsection so and so till the date of the refund of such date. Now अब इन्होंने यहाँ क्या प्रपोज किया है, सब्स्टिट्यूट किया है इसको, क्या बोल रहे हैं, interest not exceeding 6% shall be payable in respect of such refund for the period of delay beyond 60 days from the date of receipt of such application till the date of refund of such date. तो बात बहुत सीधी है कि आप जब से अप्लाई करोगे तब से लेकर जिस डेट को आपको रिफंड मिलेगा तब तक के लिए आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा. प्लीज टेक केयर, इफ देयर इज नो डिले of making the refund, that means within 60 days period if it is refunded there is no interest, but if the period of refund exceeds beyond 60 days, then in that case interest का जो computation कहाँ से कहाँ तक होगा, from the date of the receipt of application, refund application, till the date of the refund. तो पहले दिन से 70 डेज है तो 70 डेज के लिए उनको रिफंड देना है. इट्स नॉट कि 10 डेज के लिए उनको रिफंड देना, बिकॉज द वर्डिंग इज वेरी क्लियर. बियॉन्ड भाई डिले हो गया, डिले क्या हुआ, 60 डेज का डिले से ज्यादा का डिले हो गया, तो फिर रिफंड इंटरेस्ट कहाँ से कैलकुलेट किया जाएगा, फ्रॉम द डेट ऑफ द रिसीट ऑफ एप्लीकेशन टिल द डेट ऑफ द रिफंड ऑफ सच टैक्स. ये प्रोविजन क्यों लेकर आए, ये तो पहले भी था. इफ यू सी उन्होंने पहले भी लिख रखा है, from the date of the receipt of application under subsection till the date of the refund, right? Why this provision is there, why this amendment is there? See, it is very clear that the rate is also specified or more or less the period is also specified. तो interest calculate करने के लिए क्या चाहिए आपको, P into R into T, principal amount, that is the means here the principal amount should be taken as the refund payable amount. Rate is also clear 6% and the time is also clear. Then what else they are thinking, for which the change is proposed, right? And memorandum is also having some sort of expression behind this particular change. It says that bill seeks to amend section 56 by substituting certain words therein which empowers government to provide rules the manner of computing the interest in respect of the refund payable for the period of delay beyond 60 days from the date of receipt till the date of refund subject to conditions. And ये बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट को वो एम्पावर करना चाहते हैं अमेंडमेंट के माध्यम से, ताकि वो रूल्स में कई बातें लिख पाए सो फार एज दिस इंटरेस्ट एस्पेक्ट इज कंसर्न. अब रूल में लिखने के लिए है क्या, क्वेश्चन ये हमारे सामने, राइट? तो दैट पॉइंट इज नॉट एक्सप्लिसिटली रिटन इन द मेमोरेंडम आल्सो कि एग्जैक्टली वो रूल में क्या लेकर आना चाहते हैं, बट हमको जो फील होता है वो ये है, व्हाट वी अंडरस्टैंड इज कि एक तो उन्होंने डेफिशिएंसी मेमो जहां रेज किया है, डिपार्टमेंट हैज रेज द डेफिशिएंसी मेमो. डेफिशिएंसी मेमो क्या होता है, व्हेन यू अप्लाई फॉर अ रिफंड इन RFD-01 and if there is any procedural gap or substantive gap in application, कि आपने डॉक्यूमेंट अटैच नहीं किया, आपने कंप्यूटेशन सही से नहीं किया, आपके नंबर सही नहीं है, एक्सेट्रा, जो भी रीजन है, इन दैट केस डिपार्टमेंट में इशू द डेफिशिएंसी मेमो. तो अब यहाँ से एक एप्रीहेंशन जो है, या जो डिपार्टमेंट की एग्जिस्टिंग प्रैक्टिस में जो लोग ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, और जो ट्रेड जो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है मैटर, की जब भी डेफिशिएंसी मेमो उनको इशू होता है तो फिर ऐसे केस में जो ओरिजिनल डेट ऑफ फाइलिंग द एप्लीकेशन है वो बेस डेट कंसीडर किए बिना वो लोग कहाँ से कंसीडर करते हैं, जब से उस डेफिशिएंसी को रिमूव किया है. जब से उस डेफिशिएंसी को रिमूव किया है
उस डेट से वो फिर पीरियड फॉर द पर्पस ऑफ इंटरेस्ट कंसीडर करते हैं। तो रिमूवल ऑफ डेफिशिएंसी की डेट से वो पीरियड कंसीडर किया जाए या डेट ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन उनको कंसीडर किया जाए। तो यहाँ that we feel or we consider that the date of removal of the deficiency के बजाय वो date of the receipt of application पे emphasize कर रहे हैं। और वो क्योंकि इन्होंने in such manner as may be prescribed है, तो आने वाले टाइम में ये देखिए आप, यहाँ इन्होंने ये नहीं लिख रखा था कि to be computed in such manner and subject to such conditions and restrictions as may be prescribed. This wording was not here. तो अब ये रूल पे डाल दिया है, रूल में उन सिचुएशंस को क्लैरिफाई करेंगे कि एग्जैक्टली ऐसे केस में पीरियड कहाँ से कहाँ का कैलकुलेट होना चाहिए। तो ये एक बहुत ही टेक्निकल और इंटरेस्टिंग अमेंडमेंट हमने देखा। नाउ वी हैव सेक्शन 122 विद अस, सेक्शन 122 विद अस, राइट। सेक्शन 122 talks about the penalties for the certain offenses. Now they have come up with section 122 subsection 1b, where the e-commerce operator is being made subject to the penal consequences on the certain offenses, right? जो मैंने आपको पहले भी बताया है जब हम composition scheme के change को पढ़ रहे थे कि if they do allow a composition registered person to make the interstate supply by using the platform of e-commerce operator, the e-commerce operator shall be liable to pay the penalty amount equivalent to the tax involved had such supply been made by the registered person other than the composition person. तो एक बहुत ही important amendment यहाँ पे प्रपोज कर रहा है। दूसरा क्या है, एक section 24 में लिख रखा है if a person who makes the taxable supply through the e-commerce operator, then in that case the person is required to get registered. तो उसको आप ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अगर सप्लाई कर रहे हैं तो यू आर सपोज टू गेट रजिस्टर्ड, राइट। अब अनरजिस्टर्ड पर्सन को अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर ने अलाउ कर दिया है, इफ एन अनरजिस्टर्ड पर्सन इज अलाउड बाय एन ई कॉमर्स ऑपरेटर टू एंगेज इनटू ट्रेड, तो एग्जिस्टिंग पोजीशन में ई कॉमर्स ऑपरेटर को कोई लायबिलिटी नहीं थी। बट अब ये 122 सबसेक्शन 1b में एक लायबिलिटी लेकर आए हैं ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए कि दे शुड नॉट अलाउ अनरजिस्टर्ड, इफ दे डू अलाउ इट they should ready to face the consequence. तो अनरजिस्टर्ड पर्सन अगर सप्लाई करेगा तो टैक्स देगा नहीं, तो जितना टैक्स अदरवाइज बनता था उतने अमाउंट के इक्विवेलेंट की पेनल्टी ई कॉमर्स ऑपरेटर विल हैव टू पे। सो दिस इज आल्सो अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड अ वेरी जो बोलते हैं ना कि एक बाउंड्री जो है पूरा का पूरा कवर किया जा रहा है, राइट। जहां जहां भी गैप है उसको कवर करने। एंड ई कॉमर्स ऑपरेटर इज सेड टू बी द रेगुलेटेड, मतलब वेल इक्विप्ड इंडस्ट्री, राइट, नॉट रेगुलेटेड, वेरी वेल इक्विप्ड इंडस्ट्री। तो वो लोग वो कंट्रोल डाल सकते हैं, उनको अपनी टेक्नोलॉजी से सब चीज करना चाहिए। तो वही लॉ, बिकॉज गवर्नमेंट मे नॉट बी एबल टू कैच एवरीथिंग, नाउ दे आर आस्किंग ई कॉमर्स ऑपरेटर टू डू दिस, राइट। Then we have certain imprisonment and compounding related provisions which I am not considering it. Looking the purpose of this session, and the the fraternity I do have, so I am not going to take a very technical set of provisions because उसका अपना एक बहुत लेंदी डिस्कशन है, वो उतना रेलेवेंट नहीं होता है इस फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम के कॉन्टेक्स्ट में, तो मैं वो प्रोविजन आपको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। राइट नाउ आई एम कमिंग अप विद शेड्यूल 3 वेरी इंटरेस्टिंग, जो हमने सेक्शन 17 के टाइम पे भी डिस्कस किया था। ओके, एंट्री नंबर सेक्शन शेड्यूल 3 क्या है? शेड्यूल 3 इज नथिंग बट the list of activities which neither to be treated as supply of goods nor to be treated as supply of services. So activities जिसको supply नहीं माना गया उसकी एक list है which is ranging from serial number 1 to serial number 8B. Okay. Now प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जो ओरिजिनली जो हमारे सामने शेड्यूल 3 था उसमें 7 and 8 की एंट्री नहीं थी। 7 और 8 जो है वो फाइनेंस एक्ट 2018 से लाए गए थे। तो पहले ओरिजिनल जो एक्ट था उसमें 6 एक्टिविटीज ऐसी थी जिनको सप्लाई नहीं माना गया था। अब 7 और 8 जो फाइनेंस एक्ट 2018 से लेकर आए,
तो वो प्रोस्पेक्टिवली ट्रीट किए जा रहे हैं. डिपार्टमेंट इज ट्रीटिंग दीज एक्टिविटीज नॉट टू बी ट्रीटेड एज अ सप्लाई विद प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट. कि फिर कि साहब ये तो फाइनेंस एक्ट 2018 से आए, लेकिन अगर उसकी इफेक्टिव होने से पहले तक अगर आपने नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू नॉन टैक्सेबल टेरिटरी या आईसी सेल आपने किया है, कस्टम बॉन्डेड वेयरहाउस गुड्स को आपने सप्लाई किया है, तो इन चीजों को वो सप्लाई के दायरे से बाहर नहीं मानते हुए उस पर टैक्स लगा रहे थे. नाउ टू रिमूव द एनोमली, it is proposed that these entries 7 and 8 should be treated as introduced with retrospective effect from 1st of July 2017. तो अब उन्होंने उस एनोमली को दूर किया है कि भाई नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू नॉन टैक्सेबल टेरिटरी किया है, कस्टम बॉन्डेड वेयरहाउस गुड्स को आपने सप्लाई किया, हाईसी सेल अगर आपने किया है तो वो 1 जुलाई से 2017 से ही सप्लाई के दायरे से बाहर माने जाएंगे. मीनिंग देयर बाय इज कि उस पर अब डिपार्टमेंट कोई भी कोएर्सिव टैक्स एक्शन नहीं लेना चाहिए, राइट. कोई भी तरीके का उस पर लेवी नहीं लगना चाहिए क्योंकि वो सप्लाई ही नहीं है. बट प्रॉब्लम यहाँ ये आ रहा है कि प्रपोज चेंज हमको ये बोल रहे हैं, नो रिफंड शैल बी मेड ऑफ ऑल द टैक्सेस व्हिच हैज बीन कलेक्टेड बट व्हिच वुड नॉट हैव बीन सो कलेक्टेड had subsection 1 been in force at all material times. तो ये बोल रहे हैं कि अगर आपने टैक्स कलेक्ट कर लिया है तो उसका कोई रिफंड आपको नहीं दिया जाएगा. तो अगर आपने इस पे टैक्स कलेक्ट करके और सरकार को पे कर दिया है तो फिर अब उसका रिफंड नहीं मिल सकता. ये कह के कि साहब 1st of July 2017 से वो इफेक्ट में नहीं था. तो दिस इज अनदर डबल स्टैंडर्ड ऑफ द गवर्नमेंट. They should be very transparent and they should also behave ethically in my view. जो चीज है ही नहीं सप्लाई, उस पे आपने टैक्स कलेक्ट भी कर लिया है तो you should refund it, right? तो ये एक चीज हमारे सामने है. एक लास्ट प्रोविजन जो मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ, that is place of supply related provision. Place of supply of services by way of transportation of goods. Now you please consider that place of supply. The GST law is always named as destination based tax, right? And you all understand that nature of supply, that is interstate and intrastate supply, depends upon two factors: location of supply and place of supply. If location of supplier and place of supply both are in the same state, it is treated as intrastate. If both are in a different state, I am located in Maharashtra, place of supply happens to be in Delhi, so it should be treated as interstate supply, not the intrastate supply, right? Now, a particular type of service, that is transportation service, and this transportation of goods, right? If takes place, what should be the place of supply when the supplier and recipient both are located in India, right? तो अगर मैं आपको ट्रांसपोर्टेशन कर रहा हूँ महाराष्ट्र से दिल्ली में, आई एम द सप्लायर, आई एम द ट्रांसपोर्टर एंड यू आर द रेसिपिएंट ऑफ द सर्विस, मींस यू आर पेइंग द फ्रेट टू मी, राइट? इफ वी बोथ आर लोकेटेड इन इंडिया, either both are located in same state or different states in India, in that case the place of supply is determined under section 12 subsection 8. It says that existing provision, right? If it is B2B supply, तो आपने केस में Delhi is the place of supply. You are the recipient, you are the registered recipient. You are paying the freight to me for the transportation of goods services. Okay. So the place of supply is Delhi, irrespective of the point of fact कि मैंने goods कहाँ से pick किया है, कहाँ deliver किया, right? If it is B2C supply, then in that case, pickup point is treated as a place of supply. So if you are located in Delhi, you are unregistered person, you are paying the freight to me for the purpose of transportation of goods, and you wish me to pick the goods in state of Rajasthan, and I am supposed to deliver it in the state of Madhya Pradesh. आप दिल्ली में बैठे हैं, आपने मुझे इंस्ट्रक्ट किया है that I should pick the goods from Rajasthan and I should deliver it in the state of Madhya Pradesh. So pickup point here Rajasthan, then in that case place of supply happens to be state of Rajasthan. And being a supplier, I am located in Maharashtra, तो मेरी IGST वाली सप्लाई हो जाती है, ठीक है? ये इसका पूरा इम्प्लीकेशन है, राइट?
इसके साथ में आज की तारीख में एक प्रोवाइजो है कि ये बोलते हैं कि जब भी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स टेक्स प्लेस आउटसाइड इंडिया, आप दिल्ली से हैं, आपने मुझे बोला कि गुड्स को ऑस्ट्रेलिया डिलीवर करना है, Perhaps I think there is no connectivity, and also there is no increase. हेलो।
मैम माय सेशन इज ओवर. कभी डिस्कनेक्ट हुआ था मैडम ये? नहीं, ये डिस्कनेक्ट कब हुआ था मैडम? हाँ, मतलब ये कितनी देर पहले मैं डिस्कनेक्ट हुआ था? आई आई ओके 3-4 मिनट पहले, 3-4 मिनट पहले. okay, thanks. Then it's okay because I was continuously delivering this, but I was not knowing that at what particular point. Yes, yes, ma'am. Hello. 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 Yes, sir. This is Dr. Jadhav from Kolhapur. From where? Hello. Hello. Yes. Am I audible, sir? This is Dr. Jadhav from Kolhapur. Okay. Yeah, just my question is, when the goods are supplied by one party to another party, at that time, what can be included for the calculation of value of supply? I'm not getting your question. Sir, when the one party is sending the goods or supply the goods to the another party, so at that time, which value or how to calculate the value of supply? Okay. So Or we which have which? Yes. so we have section 15. We have section 15 titled as value of taxable supply. Okay. And section 15 is ranging from 15 subsection 1 to 15 subsection 1. Simultaneously, we have rule 27 to rule 35. Okay. So these are the provisions based on which you can determine the value of supply. Now it depends what type of supply it is, based on which we'll have to carve out the value, right? So in general, if you ask me to conclude it, benchmark provision is that the value section 15 subsection 1 says that value shall be the transaction value, which is the amount actually paid or paid when the supplier and recipient both are not related person and the price is the sole consideration. Okay. So if these are satisfied, whatever the amount paid or payable is the transaction value. If I sell the mobile to you on say 1 lakh, okay, at 1 lakh rupee, if I am selling it, now we both are related person and the price is the sole consideration. So 1 lakh shall be the value of taxable supply. Okay, sir. Thank you, sir. Any more questions? Hello, good afternoon, everyone. Good afternoon. Sir, I want to ask that if any good is imported in India, then which type of GST is applicable on that? IGST section. You may prefer to read section 11. Or sir, is there any provision of additional custom duty too? See, that is not determined by GST law. That is determined by Customs Act. Okay. Okay. So that is basic custom duty and IGST. Both are the both are the common duties which you can say. In addition to this, we have several type of custom duties, anti-dumping duty, okay, and social SWC, social welfare cess. So that is also there with us. Okay. Thank you, sir. Thank you so much. Yes.
In respect of this discussion, if you have any question, please let me know. Otherwise, GST is too vast, right? It is too vast. So a big gamut is there. One may always have a number of questions, but I wish the queries to confine the queries in today's context. Okay. So, ma'am, I would request you to please conclude it. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much, sir.